Okay. Okay. मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी सर। तो मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। चलो। ओके, सो लेट मी प्रूव द कन्वर्स। कन्वर्स भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। वी हैव टू शो दैट अगर लेंथ दोनों साइड्स, दोनों आर्क लेंथ की बराबर है, देन उसका जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है वो भी सेम होना चाहिए. So let's do that. Conversely, suppose that f is an isometry and it preserves the length. And let, जैसा कि हमने इससे पहले किया था, t goes to ut vt be a curve in u, the domain of, क्या मैं कह रहा था, domain of domain of sigma 1 उसका नाम दिया था हमने. ठीक है, where t belongs to some interval alpha beta, obviously curve है तो उसका पैरामीटर कहीं बिलोंग करेगा, and alpha 1 at t and alpha 2 at t be the two curves, be the corresponding curves on the patch sigma 1 and sigma 2, so that, क्योंकि मैं कह रहा हूँ f is an isometry and alpha 2 is nothing but f composition alpha 1, so that alpha 1 at t and alpha 2, सीधे लिख लो, चलो, alpha 2 at t have the same length का मतलब ये है, it means that t naught t from fixed point to t, e1 u dot square plus twice f1 u dot v dot plus g1 v dot square whole raised by 1 by 2 dt is equal to t naught to t e2 u dot square plus twice f2 u dot v dot plus g sub 2 v dot square. मैं लिखूंगा ये क्या है, for all t naught t belonging to my, I should write t1 क्योंकि मैं फिक्स करना चाहूंगा इसको, of course belonging to my interval जो ना यहाँ t belong करता है, तो ये लेंथ बराबर होगी where of course E1, F1, G1 are the first order fundamental magnitudes of of course sigma 1 जो पैच है वहां पे, and E2, F2, G2 are the first order fundamental magnitudes of this image patch in F composition sigma 1. So we have to show that. So if this is true, I just can basically integrate and square. So hence it implies that, hence we have E1 u dot square plus twice F1
u dot v dot plus g sub 1 v dot square is equal to e sub 2 u dot square plus twice f sub 2 u dot v dot plus g2 v dot square. This is what we get. Let's call this equation star. We have to show that basically E1 is equal to E2, F1 is equal to F2, यानी इनके fundamental forms same है. तो ये हमें दिखाना है. So ये जरूरत नहीं है कि वो लिखना, हम दिखाएंगे. तो now what we do, now fix some t naught belonging to my interval alpha beta, जो ना उस कर्व की डोमेन है, उसका पैरामीटर की रेंज है, and let u naught be equal to u at t naught and v naught be equal to v at t naught. ठीक है? We apply star to some special curves. We apply star for the following choice. For the following, क्योंकि it is true for all curves, तो हम particular choices लेंगे. For following choice of curves, t going to u at t, v at t, inside u, the domain of alpha. तो ये मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, this equation. This is true for all curves, तो मैं कुछ particular curves लूँ in the domain of u. By that I mean, पहला वाला u को मैं लूंगा u naught plus t minus t naught और v को मैं v naught ही फिक्स करूंगा, so that u dot is equal to 1, क्योंकि ये तो constant numbers है, and v dot is equal to 0. Now this does define a curve, right? This basically defines a curve जिस पे a sort of a u curve जहाँ v constant है, यानी अगर मेरा uv plane ये है, ये मेरा u है वहाँ पे डोमेन, मैंने एक तरह से इस टाइप की कर्व ली, मैंने एक पॉइंट को फिक्स किया u नॉट v नॉट जो वहाँ पे है, फिर मैंने ली ये कर्व which goes to this point but जिसका v constant है, यानी इस टाइप की कर्व मैंने, इस टाइप की कर्व यहाँ पे मैप होती है, फिर वो वाया f दूसरी जगह मैप होती है, लेकिन इस कर्व के लिए u डॉट 1 होगा, v डॉट 0 होगा, और चूंकि हर कर्व जो यहाँ से यहाँ जाती है उसके लिए स्टार सेटिस्फाई होता है, तो अगर मैं u डॉट को 1 लेता हूँ, v डॉट को 0 लेता हूँ, we get e1 is equal to e2. सिमिलरली अगर मैं दूसरी कर्व लेता हूँ इस टाइप की, मतलब यहाँ तो वो स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन यहाँ पे वो कर्व होगी, फिर यहाँ पे कर्व होगी, उसकी लेंथ बराबर होगी, उससे हमें ये मिलेगा. सो मैं अगर दूसरी कर्व लूँ, u is equal to u dot and v is equal to v naught plus t minus t naught, right? So that would give me, so that u dot of 0 होगा and v dot 1 होगा, which gives me g1 is equal to g2, क्योंकि v dot u dot 0 है, तो ये दोनों टर्म्स गई. एंड तीसरी चॉइस, थर्ड चॉइस होगी basically u is equal to u dot plus t minus t naught, v is equal to v dot plus t minus t naught, basically some curve of this form. मैंने इस तरह की कोई कर्व लूंगा मैं, something like this at some angle, तो of course इसकी मैपिंग यहाँ होगी, so उसके लिए फिर क्या होगा, you would basically get u dot, so that u dot is equal to 1 and v dot is equal to 1, from which, from star,
we get, what do we get? क्या मिलेगा? अगर u डॉट b 1 है, v डॉट b 1 है, you will get e1 plus, चलो, e1 plus twice f1 plus g1 is equal to e2 plus twice f2 plus g2. लेकिन हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, which implies that f1 is equal to f2. यानी इन दोनों पैचेस के फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म सेम होंगे एंड वी आर डन. अब एक और रिजल्ट है जो हम करेंगे एंड आई थिंक उसके साथ हमारा क्या बोलते हैं थर्ड यूनिट खत्म हो जाए. थर्ड यूनिट थोड़ा छोटा है लेकिन फोर्थ यूनिट बड़ा है. आई होप वो हम पूरा कर सकें टाइम पे. तो थ्योरम ये है, द एरिया ऑफ अ सरफेस पैच, ये हमें पहले ही करना चाहिए था वैसे, ये सिंपल ऐसा कुछ है. द एरिया ऑफ अ सरफेस पैच is unchanged under reparameterization. Reparameterization to prove basically, okay, okay. So I have two surfaces basically, actually same surface है but reparameterized. मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे पास एक सरफेस पैच है, अगर मैं यूवी पैरामीटर लेता हूँ, चलो यूवी पैरामीटर, या फिर मैं लेता हूँ यू प्राइम वी प्राइम पैरामीटर, और ये मेरा जो सरफेस पैच बेचारा यहाँ पे, ठीक है. अब ओके, आर एट यूवी भी है, यही सरफेस मिलती है, वही होता है ना रिपैरामीटराइजेशन. और आर एट यू प्राइम वी प्राइम, so let me call it tilde just to make it a little different, वो भी वही सरफेस हमें मिलती है, राइट. तो फिर हम कहते हैं इन दोनों पैरामीटर्स को जोड़ने वाली जो फंक्शन है वो होती है से u प्राइम इक्वल टू सम phi of uv and v prime is equal to psi of uv. और अंडर रेगुलरिटी हो, चूंकि ये सारा वो जो reparameterization maps में जो होना चाहिए, they should be differentiable, they should be bijection, उनका inverse भी exist करना चाहिए, वो भी differentiable होना चाहिए. So this is what joins these two parameters and both give rise to the same surface. So now what we are saying that if I take a surface patch here, right, और इसका एरिया निकालो, ठीक है. और एरिया निकालने का एक तरीका है, वो क्या है, एरिया निकालने का क्या तरीका है, तो मैं ऑफ कोर्स इस सरफेस पैच के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे यूवी प्लेन या यू प्राइम वी प्राइम, चलो कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई ओपन सेट होगा, यहाँ कोई रीजन होगा जो यूवी प्लेन में है और उसको हम यहाँ पे ले रहे हैं. तो इट इज मैप टू द सरफेस पे. मैं इसका एरिया ढूंढना चाहता हूँ, तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको छोटे छोटे खानों में जैसे इंटीग्रेशन में करते हैं. मान लो ये रीजन आर है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इस छोटे से एलिमेंट की मैपिंग करता हूँ यहाँ पे. और तुम्हें याद होगा इसका तो खैर होगा डी यू डी वी, दैट्स ऑब्वियस. तो ये छोटी सी चेंज रेक्टेंगल, or it would be mapped to some, and du dv would always be equal to h times किसके बराबर होगा, h times, मैं बोल गया. तो यहाँ पे जो मतलब ज्यादा कुछ करना नहीं है, बेसिकली r sub u किसके बराबर होता है, ये छोटा सा एंगल एलिमेंट हमने किया था एरिया ऑफ द सरफेस एलिमेंट, याद नहीं है इस टाइम वो किसके बराबर होता है, बट h आ जाता है, यानी should be ru
नहीं, जैकोबियन आ जाएगा कि एच आ जाएगा, एच आ जाएगा. So this is actually RU cross RV by using the fact that अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो RU पे हूँ, वहां से जा रहा हूँ तो RV पे हूँ, और साथ में क्या आएगा, तो वहां पे जो चेंज होगी वो क्या होगी. अरे यार, एरिया ऑफ द सरफेस एलिमेंट हमने निकाला था एक जगह, किसी को याद है वो किस यूनिट में था. वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मुझे याद नहीं, लेकिन मतलब दो लाइंस में आ जाता है. एरिया ऑफ द सरफेस एलिमेंट, डज एनीबॉडी सर रिमेम्बर. HDUDV था. एच तो ये है, और साथ में क्या था. हाँ, एक DUDV. सरफेस एलिमेंट जो यहाँ पे होगा वो, ये तो खैर डी यू डी वी है. सो ये हमें मिलता था डी यू डी वी, यानी एच डी यू डी वी. अब मुझे याद आया, अरे मैं क्या कर, यानी ये जो यहाँ पे छोटे से सरफेस एलिमेंट का है वो है बेसिकली एच इनटू दिस चेंज इनटू दिस चेंज. आई गॉट इट. तो ये एरिया ऑफ द सरफेस एलिमेंट यहाँ पे ये है. तो फिर अगर मैं पूरे का निकालूंगा तो मैं इनको छोटे से छोटा करता जाऊंगा, तो यहाँ पर भी अकॉर्डिंगली ये छोटे से छोटे हो जाएंगे. तो फिर इसको इंटीग्रेट करूंगा ओवर ऑल यूवी, यानी बेसिकली डबल इंटीग्रल ओवर दिस आर एच टाइम्स डी यू डी, यानी जो मेरा सरफेस पैच का एरिया होगा, सो वो होगा ये जो रीजन यहाँ पे बनेगा, राइट, इनटू आर यू क्रॉस आर वी इनटू डी यू डी. ये जो उसका डोमेन है उस पैच का इनवर्स इमेज जो यूवी प्लेन में है. सीधी इसी तरह से, हाँ ठीक है, इसी तरह से अगर मेरा ये बजाय यूवी प्लेन के यूवी प्राइम प्लेन में होगा, अब जाहिर सी बात है यहाँ कुछ डिफरेंट रीजन होगा क्योंकि डिफरेंट फंक्शन है. मान लो ये आर प्राइम है इसका रीजन, राइट. सो अगेन आई गेट टू द सेम सरफेस पैच, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इस यही सरफेस पैच है, ये टुकड़ा मैंने लिया, तो इसका मतलब इसका एरिया होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, this would be integration double integral over r prime, right. Again you would have basically ru prime cross rv prime into du prime dv prime. ठीक है ना. तो हमें दिखाना है बेसिकली ये दोनों बराबर, ज्यादा कुछ नहीं. लेकिन अब जरा मुझे याद करना था वो सरफेस एलिमेंट का क्या था एरिया, फिर हम इंटीग्रेट करते हैं. ओके, नाउ प्रूफ. Let sigma from, I should write r, r from some region u to r3 and r tilde लेते हैं, चलो r tilde from some region, I should take u tilde to r3 be the reparameterizations of the same surface patch on a surface. ठीक है. वैसे ये ऑब्वियस भी लगता है, क्यों, क्योंकि एरिया में क्या फर्क पड़ेगा उसको किन कोऑर्डिनेट्स में हम लेंगे. लेकिन यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये आइडिया है कि जो हमने डिफाइन किया है एरिया को, या जो जिस तरह से हम डिफाइन करते हैं वो कंसिस्टेंट है. उसको नहीं पड़ना चाहिए फर्क, जब मैं उसको इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स लिख रहा हूँ इसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो हम दिखाएंगे नहीं पड़ता. ठीक है, कि नहीं हमारी जो हमने जिस तरह से डिफाइन किया वो कंसिस्टेंट है. ठीक है, आई होप. ओके, नाउ लेट I should prime लूं कि ये लूं prime tilde. So let u prime equal to phi of uv and v prime equal to psi of uv be the change of parameters, the change of parameter transformations from
u to u tilde. ओके, ठीक है, u tilde में ये है, ठीक है. Or should I write? अच्छा, phi uv है, right. So let R be the region in the domain of of u of this R corresponding in a problem. Domain नहीं लिखे. In u corresponding to the surface page, and R tilde be the region in u tilde corresponding to the same surface patch. The same surface patch. Then area of the surface patch R is integration over R u prime cross RV du dv, and the area of the surface patch, yes, R tilde is what? Integral over R tilde u prime cross R tilde v prime du dv. Okay, now what? और यहाँ u prime होना चाहिए. Okay, now हमें simply करना है. Now we know that ru cross rv is equal to, अगर तुम्हें याद हो, Jacobian of phi and psi, जो हमारी पैरामीटराइजेशन है, into ru prime tilde cross r tilde v prime. यहाँ मैंने tilde लिखा, वहां हम नहीं लिखते थे, doesn't matter. यहाँ थोड़ा हम फंस गए हैं, थोड़ा सा हमें इसको और इसको अलग दिखाना है, अदरवाइज दे आर बेसिकली द सेम. ये हम कर चुके हैं, जैकोबियन के बराबर होता है. दैट मींस आर यू क्रॉस आर वी, मैंने उल्टा तो नहीं लिखा, नहीं सही लिखा, इज इक्वल टू Jacobian of phi psi, which changes the region R to R tilde. इसमें मुझे हमेशा कंफ्यूजन होता है. इसका मॉडुलस R tilde u prime cross R tilde v prime. So therefore, what can I do? I can take this integral R ru cross rv du dv is equal to integral over the same region ru prime cross rv prime. Of course यहाँ पे tilde है, ये बहुत easy result है, तो इससे घबराना नहीं. Jacobian of this phi and psi, whatever that is, Jacobian of the transformation into du dv, which is nothing but, which is exactly R tilde. तो मैंने क्या किया, ठीक है, बिल्कुल, आर यू क्रॉस, मैंने क्या किया, आर यू tilde क्रॉस आर बी tilde. I hope I write it properly. du prime dv prime, मुझे थोड़ा इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, ये इसके बराबर होता है. Why? बिकॉज चेंज ऑफ वेरिएबल फॉर्मूला कहता है, अगर तुम फंक्शन को ऐसे ही करोगे, रीजन्स को बदलोगे, यानी दिस इज इक्वल टू दिस. एक्चुअली चेंज ऑफ वेरिएबल्स फॉर्मूला कहता है, ये जो मैंने बाद में लिखा, ये इसके बराबर होता है.
क्योंकि इसका एरिया होगा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स में, प्रोवाइडेड वी मल्टीप्लाइड बाय द जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, जहां से हमें वो क्या बोलते हैं यू प्राइम वी प्राइम बन जाता है यू वी, मतलब यही होता है, मतलब you just by change of variables formula for, so मैं यहाँ लिखता हूँ, आई होप मैंने कहीं मिस तो नहीं किया, इधर उधर तो नहीं किया, हाँ यहाँ पे ये है, did I do the same thing? यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, तो मुझे देखना पड़ेगा ये जैकोबियन कहाँ आ जाता है, सो इट इज यू प्राइम बाय यू, ठीक है, नहीं ठीक है, तो यहाँ पे रीजन है बाय change of variables formula for multiple integrals, वहां जैकोबियन से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये छोटा सा रिजल्ट है कि हमारी जो डेफिनेशन है वो कंसिस्टेंट है, मतलब एरिया डज नॉट चेंज बाय रिपैरामीटराइजेशन। आई थिंक दैट फिनिशेस अवर यूनिट 3। तो मैं इसको बंद करता हूँ, मुझे अटेंडेंस भेज देना तुम।